Hi everyone, I am Chanakya and welcome to another video. So recently, when I was going through my Instagram feed, तो उस पे मैंने GaryVee की एक IGTV वीडियो देखी और उस वीडियो में पीटर मैकिनन ने GaryVee से क्वेश्चन पूछा अबाउट YouTube, like what to do when you're starting your YouTube. एंड गैरी ने उसका बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही वाइज, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया, जैसे कि गैरी हमेशा देता ही है. तो देन आई थॉट कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट माई यूट्यूब and a part of my content is also going to revolve around this type of content, which is self-help, motivation, productivity, encouragement, and etc. So why not start with this video? So let me show you the question which Peter asked from Gary and then discuss upon it. Let's start with the Peter's question. This is the question. This is what I want some knowledge on. Yes. Before I started YouTube, all of my friends, or a good portion of them, all said to me, don't bother with YouTube. It's way too saturated. You've missed the train. You're nearly 30. You should probably focus on something that actually has a longevity, something practical, something that you're going to actually be able to sustain with. You've missed the boat was the key word. You've missed the boat. Yes. So I'd love for you of why you think that's both. So, जैसे कि आपने देखा, जब पीटर अपना चैनल स्टार्ट कर रहा था तो कितने सारे उसके फ्रेंड्स ने, उसके पीयर्स ने उसको कहा कि डोंट स्टार्ट द चैनल, इट इज़ टू लेट, यू हैव मिस्ड द ट्रेन, यूट्यूब इज़ सो सैचुरेटेड एंड यू गॉट अ फैमिली, यू आर गोइंग टू बी 30 नाउ एंड ऑल ऑफ दैट जैज, कि कुछ प्रैक्टिकल करो. बट इफ़ यू सी पीटर मैकिनन राइट नाउ, इफ़ यू सी लाइक who is Peter Mckinnon right now? Like, he has over 5.3 million subscribers on YouTube and like he got over 2 million followers on Instagram. And ये बंदा जब स्टार्ट कर रहा था तब इसको सब ने कहा कि don't do it, it is too saturated and you will fail when you will do it. But if you see right now, like, he's so good. So basically the thing is that if you believe in something and if you are disciplined enough to do it every day, be practical about it, and you love it, you love doing it, definitely you can get some results. It is not about other people's what they think or what they are telling you. It is more about yourself. If you can be disciplined enough to pull it off, passionate enough to do it every day and be happy with it, whatever the results come, that's your thing. And Peter Mckinnon is one of the most finest examples. If you watch him, if you'll see his content also, uska content itna crisp hai and he has such a good personality and he became more than who he was right now, basically, as he ventured into the YouTube game. So that is pretty amazing. Let's see what Gary answered. It's not necessarily like bullshit or not bullshit. I think first of all, the number one thing I would tell every single person watching this, pay very close attention to who's giving you the advice. So, जैसे कि गैरी ने कहा, who is giving you the advice? आपको advice दे कौन रहा है? Do you know that? It is such a practical advice. That who is giving you the advice? Seriously, it is so wise. It is so logical also. क्योंकि हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि अगर हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, क्या बंदा वो नूब है उस फील्ड में या वो बंदा एक्सपर्ट है. जैसे कि आप फोटोग्राफी या वीडियो के बारे में किसी से पूछने जा रहे हो, मतलब कि उस बंदे को पता है कि नहीं पता फोटोग्राफी वीडियो के बारे में, उसको नहीं पता, तो गलत ही एडवाइस देगा ना आपको, या बेसिकली जो उसको पता है, जो उसने यहाँ वहाँ से सुना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से डोंट डू इट, तो वो आपको भी यही बोलेंगे कि तुम भी मत करो, क्योंकि उन्होंने खुद भी गिव अप कर दिया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सही बात बोली कि हु इज़ गिविंग द एडवाइस. इसमें मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि अगर आप घोड़े हो, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, वैसे तो हो नहीं, इंसान हो, तो अगर आप घोड़े हो और आप एक मछली से जाके पूछते हो कि मछली, आई वॉन्ट टू रन फास्ट एंड हाउ टू डू दैट, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई स्टेमिना, विन सम रेसेस. मछली बोलेगी बड़ा ही आसान है, रोज़ स्विमिंग करो, रोज़ 200 मीटर स्विमिंग करो, 300 मीटर स्विमिंग करो पानी के अंदर, तुम हो जाओगे फास्ट. पर लेकिन तुम तो घोड़े हो, तुम पानी में थोड़ी ना तैर रहे हो, तुम तो ज़मीन पर भाग रहे हो.
तो बेसिकली यहाँ पे भी यही बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी कॉन्शियस फॉर योर सेल्फ ओनली. यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, यू नो, कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड. अगर पीटर मैकिनन से तुम जाके पूछ रहे हो या किसी भी फेमस फोटोग्राफर वीडियोग्राफर से तुम जाके पूछ रहे हो तुम्हें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है, तो डेफिनेटली वो तुम्हें अच्छी एडवाइस देगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है. ही हैज़ क्रैक्ड his way up in the game, you know, he knows how things work, and he will give you the practical advice, he will give you the, you know, necessary advice what he has faced when he was, you know, going through his journey of photography and videography. तो ऐसे किसी बंदे से एडवाइस लो, आप किसी नूब से मत लो. और अगर आप किसी नूब से एडवाइस ले रहे हो वो आप ही की गलती है, आप माइंडफुल नहीं हो रहे, आप अपने लिए सीरियस नहीं हो रहे. सो गैरी सेड इट रियली वेल, बहुत ही सही point है ये वाला. Let's see the next point. I would argue that YouTube and going after a career as an influencer on Instagram, YouTube, or Facebook, or Twitter right now in 2017, 18, 19 is actually way more practical than most people realize. So, as you see in this point, like what Gary is saying, and सबसे पहली बात, ये वीडियो जो है ये 2018 की वीडियो है, एंड मैं अपनी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2021 में बना रहा हूँ. और because of, you know, the pandemic and the lockdowns, everyone is on internet. What Gary said ki, you know, it is practical to going on YouTube, Instagram, Facebook, or all the social media platform. Definitely it is so practical right now. YouTube or all the platforms might be saturated, but you know, it can never be saturated with quality content or with the uniqueness what the person brings or the perspective. क्योंकि सारे टाइप की ऑडियंसेस है, इतनी यू नो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, सारे टाइप की ऑडियंसेस, सारे टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं. सो डेफिनेटली यू नो यू विल फाइंड योर कम्युनिटी, यू विल find your people who would want to watch your videos basically. And yeah, it is so practical, everything is happening on the internet, and you to be having your own, you know, Instagram with a community and YouTube with a community, definitely you will be able to make much more money, sort of, you know. YouTube से भी पैसा आ रहा है, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे भी पैसा आ रहा है, या आप कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो उससे भी पैसा आ रहा है. सो इट इज़ रियली प्रैक्टिकल, यू नो, टू बेसिकली be on YouTube or any social media platforms, and at the same time you are sort of marketing and broadcasting yourself as well. तो लोग आपके बारे में भी जान रहे हैं, किसी को you know आपकी सर्विसेज या आपके स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ यू बीइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग कंटेंट, तो डेफिनेटली लोग यू नो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, और कुछ ना कुछ आपको काम मिल ही सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हमेशा होती ही है किसी ना किसी प्रोजेक्ट या काम को कराने के लिए. एंड आप एलिजिबल हो और आप उस पर कंटेंट बना रहे हो और आपको प्रैक्टिस हो गई है, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट. Isn't that amazing? So yeah, Gary is really right. It is really practical to go on the social media platforms right now, you know. Alright, let's see the next point. And more importantly, if you live your life where you're comfortable taking somebody else's point of view on how you should live your life, you deserve to lose. So definitely, if you live your life on the basis of what other tells you and you are comfortable with it, and उसका जो रिजल्ट आएगा और आप उससे अनहैप्पी हो, तो देन डेफिनेटली यू डिजर्व टू लूज़, क्योंकि आपने खुद के लिए कुछ सोचा ही नहीं. आपने सोचा जो दूसरे बोल रहे हैं मैं वो कर लेता हूँ, और मैं ग्रुप का भी पार्ट रहूँगा और मैं सिक्योर रहूँगा, बट जो आप चाह रहे हो और यू नो वो तो हुआ नहीं, पर जो ग्रुप चाह रहा है वो हो गया, तो डेफिनेटली यू नो विल बी सैड बिकॉज वॉट यू वॉन्टेड डिडंट हैपन बिकॉज यू लिसन टू द ग्रुप. तो जैसे गैरी कह रहा है, you deserve to lose if you know comfortable are listening to other people and living your life. Basically it is your life, you know how your life works, you know how you have reached this point wherever you are right now, how much of hard work you have done, how much of things you have gone through to reach this point. And at the same time हम किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं जिसको ये सब नहीं पता एंड हम उसकी एडवाइस ले रहे हैं. तो बेसिकली it's a bad deal. It's a really bad deal to make. Yes, you have to take your own decisions. You have to be really confident with them, and
You don't have to care, what other people are saying to you. You don't have to live your life on the basis of, what they are thinking of you. If you want to do things according to yourself, then basically listen to yourself, or whoever you can resonate with, who is speaking the same thing which you want to do. So basically बड़ा सही point है कि sort of deserve to lose if you are comfortable listening to the other. My question is very simple. Would you rather appease the inconvenience right now in the short term, or do you want to sit around as a 78-year-old and regret how you lived your life? That's the basic question. Are you willing to take the short-term lack of pain by conforming to the system? Or do you actually want to do something with your life? Everybody can get theirs. Some will get billions, some will get millions, some will get hundreds of thousands. But wouldn't you rather make $87,000 a year talking about Star Wars because you love it more than breathing than make 109 being an accountant for that firm? So, alright, in this last point, जैसे Gary कह रहा है कि are you, going to be comfortable? Are you going to be okay of not taking a little risk in the starting and missing out so much of opportunity as it comes, by putting in the hard work? Starting में basically थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर लेकिन बाद में आपको definitely उसका result मिलेगा as you put the appropriate action and being disciplined. Instead of this, you are being comfortable and being secure कि नहीं चलो मैं अपनी जॉब ही कर लेता हूँ, मुझे ये चीज़ भी पसंद है पर मैं अपनी जॉब ही कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मैं सिक्योर हूँ. ठीक है, आप जॉब में सिक्योर हो, इट इज़ गुड, बट इट इज़ नेवर बैड टू गो फॉर बेटर. बेसिकली हाउ आई सी, लाइफ इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग. You yourself always sort of feel to evolve as you hit a point in yourself, and आपको वो चीज़ दिखने भी लग जाती है, पर लेकिन आप sort of because of security you tend to stay कि नहीं ये ठीक है, पर लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लो, एंड उस रिस्क को लेने की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी क्योंकि you are new to this thing wherever you are taking the risk. स्टार्टिंग में थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी क्योंकि पता नहीं है. जैसे ही आपको थोड़ी सी गेम समझ में आएगी, आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आप you put in the work, you definitely scale up, you evolve, you win big because you have put in the work and you have gone for it. और बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी वो जॉब करने की बजाय जिसके अंदर आपको सडन अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, जैसे कि लाइक ही सेड इन डॉलर्स की सम a lakh or $1 million something yearly in comparison to making videos about Star Wars or about movies or making vlogs. उससे आपको जो चीज़ आपको पसंद भी है उससे आप 100 times पैसे कमा पा रहे हो और खुश भी हो, तो क्या वो चीज़ बेटर नहीं है ना? तो यही बात है कि it is all up to you कि like because of little bit of inconvenience, don't give up on yourself and your dream. Definitely you have to put in the work and you will get there, but it is up to you how you will go. So these were the points. Weren't they amazing? If you want to see the whole video of Peter and Gary, the link is down in the description. आप वो जाके देख सकते हो. And yeah, this video was all about this. I hope these points would be some help to you. The usual things. Follow me on Instagram, like the video if you liked it, subscribe to my channel, it really helps. Comment down below what you thought about the video or your favorite point of the video or anything you like, as it helps with the algorithm. And that's it. Thank you so much for watching. See you in the next one. Peace out.